Now see the next topic of the AC circuit, that is three-phase balance system star and delta. यहाँ तक we have covered everything. This three-phase balance system. One of the question will definitely come from the three-phase balance system. This is module. Topic is three-phase balance. So what is basically a three-phase balance system? You know कि हमारे घर में जो that is divided in parts. One is I, another one is the सिंगल फेज सप्लाई का मतलब सिंगल वायर होती है, हमारे घर में सॉकेट होती है जस्ट लाइक दिस। कभी टेस्टर डाल के देखा है? टेस्टर डाल के देखा है? एक ही में लाइट आती है, देखा है ना? तो इसमें लाइट आएगी, इसमें एक वायर में लाइट आ रही है, दैट इज फेज। यहाँ से कनेक्शन वापस जाता है, लाइक यहाँ से कनेक्शन आया और यहाँ से करंट वापस जा रहा है, ऐसा होता है न्यूट्रल। तो सिंगल फेज मीन्स सिंगल वायर जिसमें हमारे पास करंट आता है। नेक्स्ट इज थ्री फेज, थ्री वायर्स इंडिया में स्टैंडर्ड यूज करते हैं आर, रेड, येलो एंड आर वाई सीक्वेंस, आर वाई बी। अब तुम्हें इसको ऐसे मॉडिफाई करना है, ऐसे करना है, इसमें हमारे पास या तो स्टार, मतलब कैसी शेप में हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं रेड को एक साथ और ब्लू, तीनों के पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया, देन दैट विल बी रेड येलो स्टार की शेप ले ले, राइट? हो गया हमारे पास स्टार कनेक्ट। अनदर वे ऑफ कनेक्शन इज रेड है, येलो है और इस तरह से कनेक्ट, लुक्स लाइक अ डेल्टा, डेल्टा कनेक्ट। So basically what I want to say is divided in types of connection. One is the star connection, another one is the delta connection. Star connection like this, delta connection. Is there any another way also? So now we'll more discuss about the star connection. Last year star connection. Star connection like this. This one is R, this one is Y, this one is right, red, yellow, blue. Now see, if we'll have a plain wire like this, technically we call the plain wire as, okay, if we'll have a winding like this, then in that case winding को हम technically we called it as a, clear? plain wire है तो और winding वाली है तो phase है। Now next let's mark the current across it. अगर प्लेन वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो just consider it IR, this one would be IY, this one would be IB, करेक्ट? ये बीच में जो पॉइंट होता है क्या होता है? न्यूट्रल। तो कैन वी से दैट IL इज द लाइन करंट, दैट इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू IB? यस और नो? टेल मी। ओके, now similarly current flowing between N and R would be R, current flowing would in between Y would be I and Y, current flowing between N and I and B. So all these are the phase current because it is flowing across the phase, right? So IPH would be INR equal to INY equal to IN, right? Clear? Plain wire is line current and winding wire is phase current. So now tell me INR and IR.
they both are equal or not, or they are unequal? IN and INR or R, they are equal. Why? As you can see, current is flowing like this and then this. There is no diversion. Similarly, A INY is equal to IY, IN equal to IB. Correct? So what we concluded from it, that is phase current always be equal to the line current in case of star. Understood? Next one again talking about the star, but this time we'll mark the voltage. दोनों सेम में भी कर सकते हो, but ये ज़्यादा बेटर रहेगा, some confused. Again this is RYB. Let us mark first the line voltage. As you know, line is this one, the plain wire. So basically the voltage between R and Y is VRY, voltage between Y and B is V by B, and the voltage between R and B is VRB. So all these are the line voltage. VRY is equal to V by B equal to VRB. Correct? Now the voltage between N and R is VNR. Voltage between N Y is Y. Voltage between N and B, H is equal to VR equal to VY is N. Now tell me, is VNR equal to VRY? Or if I'll say, is NY is equal to VRY? Yes or no? According to देखो VNR और VNY इन दोनों के कॉम्बिनेशन से VRY बना है, तो दीज आर नॉट इक्वल. अब इक्वल नहीं है, बट इनके बीच में एक रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप पर, दैट इज VL इज इक्वल टू √3 फेज वोल्ट. डेरिवेशन आई थिंक तुम्हारे पेपर में नहीं आती और में नहीं आती है, राइट? मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल आता है. अगर एक दो पेपर में मुझे दिखेगी डेरिवेशन आई हुई है तो आई विल टेल यू. ओके, क्लियर? So basically what we have concluded that in the star connection, line current is equal to the phase current and VL is equal to times of VH. Now see, this is the question of February 2023 exam, star पे based है. तो सबसे पहले whenever they said star है तो write put it down 3 formulas. First is IL is equal to IPH, right? Second is VL is equal to √H. Another one is VPH is equal to IPH into ZPH. फॉर्मूले साथ के साथ लिख ले, उसके बाद तुम क्वेश्चन स्टार्ट करना, अदरवाइज गलती कर. नाउ दे सेट स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड impedance is how much? Impedance is Z and that is denoted by ZPH is equal to 2 plus J4 ohm. एक चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ohms law V is equal to IZ. तो ये Z हमेशा, Z क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है impedance. ये हमेशा क्या होगा? फेज में होगा, कभी भी लाइन में नहीं होगा. तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता PL is equal to IL into ZL. 90% ऑफ द स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगा जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो ये लिख के भी काट दो, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज द लोड इम्पिडेंस पर फेज कंसिस्ट ऑफ a 415 volt. Voltage is how much? 415 volt. देखो अब तुम पूछोगे कि मैम दे डिडंट मेंशन दैट वेदर इट्स अ लाइन वोल्टेज और द फेज वोल्टेज. तो अगर उन्होंने मेंशन करा है तो फेज वोल्टेज जो भी चीज़ मेंशन करी है तो वेल एंड गुड, और अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा सो वी नीड टू कंसिडर दैट वोल्टेज एज अ लाइन वोल्टेज ओनली. सो दे डिडंट मेंशन कि ये कौन सी वोल्टेज है, सो वी नीड टू कंसिडर इट एज अ लाइन वोल्टेज ओनली. PL is equal to 450 volt
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, स्टार कनेक्टेड, इम्पिडेंस ये है। The load impedance per phase consists of 10 millihenry and resistance connected in series. Calculate the load current in each phase, active power, reactive power, power factor and apparent power. पहले तुम बताओ। सी, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना। डायग्राम में दे हैव गिवन यू सप्लाई वोल्टेज और स्टार कनेक्शन है, तो तुम स्टार कनेक्शन टाइप का बनेगा, राइट। स्टार कनेक्शन के साथ व्हाट दे हैव कनेक्टेड, लाइन इम्पिडेंस ऑल्सो, तो आर और एल का कॉम्बिनेशन, आर और एल का कॉम्बिनेशन, दिस वन इज ऑल्सो आर एंड एल, यहाँ पे भी रजिस्टर भी। और उसके बाद सप्लाई भी क्या है, स्टार कनेक्टेड है, और लोड भी क्या है, स्टार कनेक्टेड है। दे डिडंट मेंशन बट वी आर रिज्यूमिंग ये है तो वो सेम ही होगा। तो सप्लाई का कनेक्शन बनाओ, स्टार कनेक्ट है। ये डायग्राम समझ में आया। दिस साइड इज लोड, लोड मतलब जो हमारा घर है, हम घर में लोड यूज कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, एसी। दिस इज लाइन इम्पिडेंस, लाइन इम्पिडेंस मतलब कि गवर्नमेंट जो हमें भेज रही है, किसी लाइन के थ्रू भेज रही है, राइट, वो ट्रांसमिशन लाइन है। दिस इज द सप्लाई साइड की गवर्नमेंट जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी भेज रही है, करेक्ट। अब इसके बाद देखो सप्लाई वोल्टेज कितनी है, हैव गिवन 415 वोल्ट, 450 वोल्ट। लाइन इम्पिडेंस दे हैव गिवन एज 2 प्लस J4 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस J4, तीनों सेम है, अलग नहीं है। और लोड कितना दिया हुआ है, 10 मिली हेनरी इंडक्टेंस और R रेजिस्ट, तो 6 है और ये 10 मिली है। मिली हेनरी से क्या हम एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस J बाई एफ एल, 6 प्लस J5, फ्रीक्वेंसी 50 है, L 10 इंटू 10⁻⁻। अब तुम ये सोचोगे कि मैम ये 2 प्लस J4 क्या दिया हुआ है, बेसिकली Z को इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, R प्लस JX से, ठीक है। Z को ऐसे लिख लो या Z को ऐसे लिख लो, रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, एक ही बात है। अगर C होता तो क्या लिखते हैं हम, R माइनस JXC, और इसका फॉर्मूला हो जाता है R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ चाहे तुम्हारे लिए नहीं है, लिख लो कि हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ़ इट इज़ RL तो R प्लस JXL लिखेंगे, इफ इट इज RC तो R माइनस से लिखेंगे। क्लियर दिस थिंग? अब तुम्हें R पता है, L पता है, तो Z आ जाएगा। अब R पता है 6 ओम है, L पता है 10 मिली हेनरी है, सबसे पहले L से XL निकाल लो, XL से फिर Z निकाल लेना अपना वही फॉर्मूले से, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। यहाँ पे भी तुम्हें R पता है कितना है, 2 है, XL पता है, कंपेयर करोगे तो 4 ओम है, दोनों से इम्पिडेंस यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ तक बोलो कोई डाउट? नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट लोड करंट इन ईच फेज। लोड करंट मतलब लोड की साइड का करंट, IL है ना, और स्टार कनेक्शन है तो IL इज इक्वल टू IPH होता है, तो हमें फेज पे फोकस करना है, लाइन पे फोकस नहीं करना। फॉर्मूला क्या होता है, VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH, यही होता है। अब मुझे फिगर में देख के बताओ कि क्या हमारे पास फेज वोल्टेज है, फॉर्मूला सबसे पहले यही लिखना जो भी निकालना है, क्या हमारे पास फेज वोल्टेज है, टेल मी। ये जो वोल्टेज दी हुई है इन्होंने, ये कौन सी वोल्टेज दी हुई है, लाइन वोल्टेज दी हुई है या फेज वोल्टेज दी हुई है, बोलो। लाइन वोल्टेज दी हुई है, तो लाइन वोल्टेज से हम क्या फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज यू नो द रिलेशन कि VL इज इक्वल टू √3 VPH, तो VPH कितना हो जाएगा, VL बाय √3, VL कितना है 415 डिवाइडेड बाय √3, राइट।
So I'm writing down the value, that is 415 divided by root 3. IPH we need to calculate. Now the left is ZPH. Up now tell me, we should consider both the impedance, line impedance or load impedance, or we need to consider the single. According to you, we need to calculate the current across the load. So we should add all the both the impedance, line impedance and load impedance, or we should need to consider only the load impedance according to you. Tell me. So we should need to add the current. Line impedance ZL1 लगा लो, कुछ भी लगा लो, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू आई है तो निकाल लो. 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 25 5 आ गया लाइन इम्पिडेंस. और यहाँ से तुम्हारे इस तरह वो भी आ जाएगा लोड इम्पिडेंस. तो Z लाइन 1 प्लस ZL लोड के लिए, दोनों के इम्पिडेंस तुम्हें वैल्यू पता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास IPH आ जाएगा. अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट. और इन्होंने लोड करंट पूछा हुआ है इन ईच फेज, मींस दे आर आस्किंग द IPH ओनली. Next they have asked the active power. Active power का formula, yeah, for the three phase there is different formula. Generally for the single phase the formula is VI cos phi for the active power, but now for the three phase formula for the active power is root 3 VL IL cos phi. Okay, in terms of line, if you want in terms of phase, then it would be H IPH cos phi. Similarly, reactive power का is root 3 VL IL cos phi. Okay, and it would be it would be 3H cos phi नहीं है, sin phi. 3 VPH IPH sin phi. Apparent power is root 3 VL IL. This would be H IPH. Back to the question. VPH पता है? हाँ पता है. IPH पता है? पता है. cos phi का क्या फॉर्मूला होता है? R by Z. ठीक है, तो इन्होंने R by Z, R भी पता है तुम्हें, Z भी पता है, आ जाएगा. उसके बाद रिएक्टिव पावर पूछा है, रिएक्टिव पावर भी आ जाएगा, रूट 3 VLIL साइन फाई, कॉस फाई पता है तो साइन फाई भी आ जाएगा. पावर फैक्टर इज कॉस फाई इज इक्वल टू R by भी आ जाएगा, और एपरेंट पावर तो आ ही जाएगा. Now see this question, they said a three-phase star-connected supply system power to the three-phase star-connected load. Supply भी क्या है? Star-connected, और load भी क्या है? Star-connected. Voltage इन्होंने specially they have mentioned system between line. Okay? नहीं भी mention होता तो we need to consider it as line voltage only. 415 volt frequency they have given as 50 hertz. Load is balanced and the load impedance ZPH, how much they have given? 8 plus J20. So R plus JXL की form में. So from here R is how much? 8 ohm, right? And XL is how much? 20. We need to calculate the line and current. Star connect line and क्या होगा? Same होगा. So basically we need to get IPH. IPH is equal to IPH ZPH. यही फॉर्मूला है. VPH is how much? VL by root. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिवाइड बाय रूट करते तो मिस्टेक आती है. IPH we calculate ZPH is root of R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. So VL is 450 by root is equal to IPH to of का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. So can we get the value for IPH from here? Active power is P is equal to L cos phi, right? L we know, IL we get it from here. Cos phi is R by Z. R is 8 and Z also we have. But similarly we'll get reactive power L IL sin phi here. Phi is XL by Z. Apparent power is root. One thing, यूनिट्स जरूर लिखना पेपर में, हो सकता है पेपर में काट ले.
It would be watt for the active power, VR for the power, V for the stored. Next one, move towards the as and press star. One question they'll either from the star or either from the data, or they can use star and data. So it would be R by, right. So let us consider one. Let us consider the voltage first. The voltage between R and Y is RY. Voltage between Y and B, R and V. So now tell me, is the line voltage or the phase voltage according to RY, RB are the voltages between the lines, right? Are the line voltage. Y is equal to RB. Now similarly, if I want to measure voltage across the windings voltage is phase voltage. 1, 2. So VPH is correct. Now tell me, VRY is equal to V12. Yes, yes, VRY is equal to V. As you can, there's no electricity in this, so potential across this whole wire is same. Across this whole wire is same, or you can consider that you are in parallel. The parallel voltage is same, right? So what we can conclude from here, that equal to line voltage is equal to the phase. Understood? Yep. Now next, mark it for the, how will you mark current? Consider Y1. The current in R branches are correct. Similarly, current 1, 2 is considered I1, 3, and so IR is equal to I. Are the line current? Now, I1, 2, I2, I3, 1, yeah, 1, 3 IP. Now tell me, is IL equal to IP, I1, 3 to IR? Yes or no? So what we can conclude, are not equal. So there is some relation, that is IL is, again you don't need to go derivation. So finally the delta connection, first we have studied for the star, then we have studied the star connection current is same, IL is, in the delta connection उल्टा है उसका, voltage is, in the star connection voltage is different, current same है तो voltage different होगा, in the delta connection voltage same. Okay, rest of the formulas are same for all the star and delta. H is पावर का फॉर्मूला भी सेम है फॉर बोथ द केस, गेस्ट पावर का भी सेम, एंड apparent power is, got it?